Jai Hind to everyone. I am Vasudha Singh and I welcome all of you onto Defense Mania. So guys, this video is about SSB myths. SSB myths क्या होते हैं? हम लोग अपने आप को क्यों इतना confuse करते हैं regarding these myths? So firstly, myth is a negative thought और a negative thought जो आप अपनी mind में डालते हैं and उसकी वजह से आपका mind वैसे ही react करता है. The mind does not respond to your negative thoughts, but mind react to your negative thoughts. So all these SSB myths will be covered in the upcoming video, as well as I will be covering myths like freshers or repeaters ka recommendation rate. Is defense background really necessary for you to get recommended? Are you the best candidate or not? Is your self-belief enough or not? All these myths have been covered by me in this PowerPoint presentation. So guys, I want all of you to have this look in a very appropriate way. So all that your mindset, आपने जितना भी mind में negative thoughts create किया है, वो actually diminish होए and so that आप लोग इस चीज़ का बहुत अच्छे तरह से फायदा लें and you give your best in the SSB. So come along guys, we'll have a look at the PowerPoint presentation. So guys, let's get started with the PowerPoint presentation on SSB myths. क्या क्या SSB myths रहते हैं? आप अपने mind में क्या क्या negative thoughts डालते हैं जो act करता है आपकी non-recommendation के through. So let's get started guys. The very first myth is language barrier. Hindi, English को हमें balance करना आना चाहिए in our SSB. If you are good in English, very good. Because SSB demands English as a normal language from you guys. But it doesn't mean that you can't speak in Hindi. You can't speak in Hindi. It has to do with your personality. You have to understand कि आपका personality test है. It is not a test of your language. But although English के लिए आपको इसलिए बोला जाता है because कल को अगर आपकी posting कहीं overseas होगी, कहीं abroad में होगी, then you should have English as the language of communication. This is the most important factor of English to be used in SSB. But no worries, if you know Hindi also, you should be representing yourself in Hindi. But yes, you should switch back to English as soon as possible. So this is a barrier. This is actually a myth just in our mind that how we actually degrade our performance, we downside our performance. So language guys, language is a very important factor as well as language is the main source of interpretation. आप कैसे एक दूसरे को समझेंगे, that is very important. All right, English, Hindi both works for you. It is your personality test. आपको ये बात समझनी पड़ेगी that SSB is your personality test. It is not your friend's personality test. It is not your family's personality test. It is you and your personality. That's it. English आता है, Hindi आता है, और अगर दोनों आता है, just balance them equally. All right. And after that, very important point is smile. Smile always makes you comfortable with yourself. For example, अगर आपको बोला जा रहा है that you have to speak in English, but somehow you're not so good in English, but you need to be comfortable with yourself. So what do? You actually smile on every situation. You respond back to every situation with a beautiful smile. That actually makes you comfortable. जब आप अपने साथ comfortable हैं, तो आपको आगे communication, आपको अपने views रखने में कोई problem नहीं आएगी. This is why smile is the most important factor in your personality. The next myth is defense background is a must for your recommendation. No guys, it's not the very important factor for your recommendation. But although अगर आप defense background से हैं, it will definitely add up to your portfolio. It will definitely add up, but it is not the sole necessity to get recommended. अगर आप किसी नॉन डिफेंस बैकग्राउंड से भी बिलोंग करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रेकमेंड नहीं हो सकते हैं. मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो कि नॉन डिफेंस बैकग्राउंड से हैं एंड दे आर रेकमेंडेड, दे आर सर्विंग इनटू द फोर्सेस. So having a defense background definitely adds to your portfolio, but it is not the sole necessity to get recommended.
बेसिकली आपकी जो क्वालिटीज है, आपकी जो पर्सनालिटी है, आप कैसे इंसान हैं, आप ग्रुप के अंदर काम कर सकते हैं या नहीं है, आर यू कंफर्टेबल विद योर सेल्फ, all these qualities actually matter for your recommendation, not your defense background. You need to keep this thing important in your mind, because बहुत सारे एस्पिरेंट्स क्या बहाना लगाते हैं, the only reason that they give कि वो लड़की या वो लड़का डिफेंस बैकग्राउंड से था तो ऑब्वियसली उसको तो सिलेक्ट होना ही था. इट इज नॉट दैट. इट इज जस्ट यू एंड योर क्वालिटीज, हाउ यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ. All right. So the next part is comparison among SSB candidates. This part is very, very prevalent in all the SSB candidates. क्या होता है कि जो recommended candidate अगर आपके साथ SSB लगाने आता है या आती है, तो आप क्या करते हैं, आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं. आप recommended candidate को बहुत ही हाई रिगार्ड में रखते हैं. All right. But the thing is, you don't have to compare yourself. You are unique. You need to understand. You as a person is unique and you can represent yourself very effectively, not by comparing yourself to other SSB candidates. उन्होंने जो परफॉर्म करना है वो करेंगे, आपको अपनी परफॉर्मेंस देखनी है. आपको ये नहीं देखना है कि मेरे ग्रुप में recommended कैंडिडेट है तो मेरा टास्क डिफिकल्ट बन जाएगा. No, it is just you, your group together. But also, above all, it is your self-belief. Do not compare yourself to other SSB candidates. सबकी जर्नी अलग रहती है और आपकी जर्नी भी अलग है. You need to understand that very appropriately. So, SSB is your personality test. It is your personality test, not mine, not your friends, not your father, not your mother's. It is your personality test. Do not compare yourself to others. Believe in your capabilities कि हाँ, I am a mature person. I have to believe in myself. I have to believe in my capabilities. And yes, I can do this. I can do this. As well as I am capable of donning that uniform. I am capable of getting into the service. So this has to be your belief system, guys. Do not compare yourself. The next myth is coaching. Coaching can harm your personality. Coaching cannot harm your personality until and unless आप खुद नहीं हार्म होना चाहेंगे. If you want कि आपको कोई हार्म करे तो वो डेफिनेटली करेगा या करेगी. बट अगर आप अपने सामने कोई शील्ड रख देते हैं, वो आपको कभी भी हार्म नहीं कर सकती चीज़. सो डेफिनेटली कोचिंग एड्स टू योर प्रेपरेशन. कोचिंग क्या है? कोचिंग एक पाथ है, एक जरिया है जो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचाएगा. बट the thing is that you have to have your own journey. पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जर्नी आपको खुद ट्रैवल करनी है. कोचिंग आपको सिर्फ इतना बताएगा कि दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी. आपको बताएगा कि जर्नी कैसी रहेगी, बट ट्रैवल आपको खुद करना होता है, वॉक आपको खुद करनी होती है. ऑल राइट. सो कोचिंग डज नॉट हार्म योर पर्सनैलिटी. कोचिंग इज अ चॉइस. कोचिंग इज डेफिनेटली अ चॉइस. अगर आपको लगता है कि आई नीड टू हैव कोचिंग, कि मुझे जानना है इन डेप्थ कि क्या क्या प्रोसीजर रहता है, देन यू कैन गो फॉर कोचिंग. बट अगर आपको लगता है कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई कैन डू दिस, आई कैन गो टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, आई कैन सर्च इन डेप्थ कि क्या है और क्या नहीं है, what is required and what is not required. If you can do that, then you are self sufficient. आपको कोचिंग की कोई जरूरत नहीं है. So just don't believe in this myth that coaching can harm your personality. कोचिंग आपको एक तरीका बताएगा कि कैसे काम करना है, बट काम आपको खुद करना है. You have to adapt to the coaching traits. You have to adapt to the coaching qualities, but do not mend your personality in between. अपनी पर्सनालिटी को मेंड मत करना instead of coached traits. For example, if you are an introvert and coaching में आपको बोला जा रहा है कि आपको extrovert दिखाना है, आपको extrovert बनना है, it doesn't mean that you have to become extrovert. No, you have to balance both the things. कि कौन से task में I need to be extrovert and कौन से task में I need to show my introvertism. So it is just dependent upon you. Coaching will never ever harm your personality.
Coaching definitely gives you a clear picture of what to do and what not to do. All right. So coming on to the next point is SSB performance depends upon a single test. Never ever. आपका SSB performance कभी भी आपके single test पे नहीं depend करेगा. SSB में you have interviews, you have psychology, you have your GTO task. Combination of all three will depend on your recommendation, will tell you that whether you are recommended or not. Not just interview, not just psychology, not just GTOs. आपको equally अच्छा perform करना पड़ता है हर एक individual test में. And also अगर आपको लगता है कि one test is not so good, मैंने इतना अच्छा टेस्ट नहीं परफॉर्म किया है, do not get bogged down. You don't have to let yourself down. उसके जो नेक्स्ट टास्क आता है, प्लीज फोकस ऑन दैट टास्क, प्लीज कॉम्पनसेट योर क्वालिटीज इन दैट टास्क, बिकॉज जो टाइम चला गया है वो चला गया है, जो प्रेजेंट में आपके सामने है उस पे काम करो. दैट इज अ लीडर लाइक मेंटालिटी. ऑल राइट. So SSB is always a combination of all the three tests, not just one. Remember this. Interview, psychology and GTOs तीनों का कोलैबोरेशन होगा, तीनों में क्वालिटीज टेस्ट होंगी, उसके ऊपर आपका रिकमेंडेशन डिपेंड करेगा. टेक वन मोमेंट वन डे एट अ टाइम. इंटरव्यू बर्बाद करके आए हो, नेक्स्ट टास्क क्या है? GTOs. GTOs में अपना 100% दे दो, कॉम्पनसेट कर दो अपने आप को. ठीक है, जहां पे खराब किया है वो टाइम चला गया है, जहां पे अच्छा कर सकते हो उस चीज को कॉम्पनसेट करो बाय परफॉर्मिंग योर 100%. ऑल राइट. एंड यस, फोकस ऑन प्रेजेंट. यू हैव टू फोकस ऑन प्रेजेंट, अदरवाइज क्या होगा, एसएसबी का अगर फर्स्ट डे अच्छा नहीं गया है या सेकेंड डे अच्छा नहीं गया है, यू विल स्पॉइल द रेस्ट ऑफ द 3 days by just overthinking. So what I want to say is that प्लीज फॉरगेट योर पास्ट, फोकस ऑन योर प्रेजेंट. आपके हाथ में अभी क्या है और आप उसको आगे कैसा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं. दैट इज व्हाट मेक्स यू रिकमेंडेशन above. So yes, this is a very great myth among guys that you have to have good score in written exams. That is, good score in written exam guarantees your name into the merit list. Remember this guys. Yes, कहा जाता है कि आपको बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ता है रिटन एग्जाम्स में, बट आई एम स्पेसिफिकली पॉइंटिंग टूवर्ड्स दोज कैंडिडेट्स जिनका रिटन एग्जाम में अच्छा नहीं आया है स्कोर. फॉर एग्जाम्पल, कट ऑफ है 155, आपका स्कोर आया है 157. सो डू नॉट गेट बॉग्ड डाउन कि अब तो मेरा कुछ हो ही नहीं सकता, इतना कम स्कोर आया है रिटन एग्जाम में, एसएसबी में मैं क्या ही कर लूंगा या क्या ही कर लूंगी. नो, डोंट डू दैट. One of my friend, he is right now into the Indian Air Force Academy. He scored 157 marks and the cutoff was 155 marks and he is in the academy. मेरे फ्रेंड ने क्या किया, उसने अपना परफॉर्मेंस कॉम्पनसेट किया. रिटन हो गया, रिटन में मार्क्स अच्छे नहीं आए. What is in your hand? Your SSB. You have time for your SSB. Go and prepare for your SSB. Score really high in your SSB so that आपके marks compensate हो जाएं. So do not get bogged down by the result of your written exams. But although अभी आपके exams आने वाले हैं, I would request you कि आप बहुत अच्छी तरह से prepare करें so that you get good marks in your written exams as well as you are able to score really well in SSB. So for that reason, you will be getting into the merit list. All right, guys. And coming on to the next point is quality versus quantity. कहते हैं कि बहुत सारी एसआरटीज करने से रिकमेंडेशन हो जाता है, या 28 या 30 एसआरटीज करने से भी रिकमेंडेशन हो जाता है. So this is a comparison between your quality and quantity. That you need to balance both the things. आपको क्वालिटी भी रखना होगा, आपको अपना क्वांटिटी भी दिखाना होगा. क्वांटिटी क्या? द नंबर ऑफ योर VAT, the number of your TAT, the number of your SRTs that you are doing. But it doesn't mean कि क्वांटिटी को अचीव करने के लिए आप अपनी क्वालिटी नीचे करेंगे. It doesn't mean that. You have to balance your quality of your thoughts with your quantity of the number of attempts you are giving, the number of
things you are attempting into the SSB. क्वालिटी एंड क्वांटिटी साथ साथ में चलेगा. क्वांटिटी को अचीव करने के लिए क्वालिटी को नीचे मत करो, दोनों को ऊपर रखो, दैट टू इक्वल लेवल पे. Combination of quality works in balance. You have to remember this. This is one mistake that most of the aspirants do, कि हमारे पास बहुत ही सारा SRTs हैं. For example, we are talking about SRTs, but we don't have that much time. हम क्या करते हैं, just to complete all those 60 SRTs, हम अपनी quality, जो हमारा thought process है, हम उसको कम कर देंगे, हम उसको छोटा लिखेंगे. All right, just because we have a pressure on our mind कि time कम बचा है, सारी की सारी SRTs करनी है. Do not do that. I know my friends who have done 30 to 40 SRTs and they are into the services. So yes, because they focused on the quality of their reaction, they focused on the quality of the situation reaction test कि हम इसमें अपना बेस्ट कैसे शो करेंगे. चाहे आपका रिस्पॉन्स बहुत ही बड़ा हो जाए, but do not limit yourself to quantity and quality. Balance them both. The next point is your past SSB attempts determines your present result. Definitely not, guys. Definitely not. अगर आप फर्स्ट 5 अटेम्प्ट्स में स्क्रीन आउट हो रहे हैं, कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हैं, इट डजंट मीन दैट इन द 6th अटेम्प्ट यू विल बी कॉन्फ्रेंस्ड आउट और स्क्रीन्ड आउट. मे बी आपने बहुत अच्छी तरह से अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट किया है एंड यू हैव रियली वर्कड ऑन योर सेल्फ, देन यू विल बी गेटिंग रिकमेंडेड. एंड ऑल्सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी जो लोग कॉन्टिन्यूसली रिकमेंड होते हैं, मे बी वो अपने लास्ट अटेम्प्ट में स्क्रीन आउट हो जाएं या कॉन्फ्रेंस आउट हो जाएं. So your past SSB attempts will not determine your present SSB result. It is the qualities that you are showing in your present SSB that will determine your result, that will determine your recommendation. So your present SSB performance determines your recommendation. This you need to keep this point in your mind. मैं 5 बारी recommended हूँ, तो it is not obvious कि मैं छठी बारी भी recommend होंगी. No, it is not like that. And अगर आप वो qualities show करते हैं, अगर आप वो officer like qualities show करते हैं, then you have chances of getting recommendations. But if you're not showing it in your present SSB, maybe you will get screened out or conferenced out. It is just you and your personality. It is just you and your qualities that gets you recommended. All right? The next is stop overdoing yourself. हम अपने आप को इतना overdo कर जाते हैं कि for example हमारी SSB को just 1 month is left. हम अपने आप को इतना overdo करते हैं कि हमें साइकोलॉजी भी एक दिन में करना है, इंटरव्यू भी एक दिन में करना है, GTOs भी एक दिन में करना है. We have to go for physical exercises also, and that too not just 2-3 kilometers, maybe 5-6 kilometers, जो कि आप अपनी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा ओवरडू करते हैं. So do not do that. You need to firstly introspect yourself कि आप कहाँ पे सही हैं और आप कहाँ पे गलत जा रहे हैं. All right? उसके बाद make a to-do list. फॉर एग्जाम्पल कि आज मैं साइकोलॉजी एंड इंटरव्यू का पढ़ूंगा या पढ़ूंगी. आई विल इंट्रोस्पेक्ट माई सेल्फ ऑन साइकोलॉजी एंड इंटरव्यू. द नेक्स्ट डे गो फॉर GTO एंड इंटरव्यू. द नेक्स्ट डे गो फॉर साइकोलॉजी एंड GTOs. ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में चलेंगे. योर माइंड विल बी फ्री. योर माइंड विल बी फ्री. इट मीन्स आपके एक्शंस फ्री होंगे. आप अपना 100% देंगे SSB में. दिस इज व्हाट इट इज सेड that keep your mind calm, keep your mind very, very free from all those negative aspects. Do not overdo yourself. अपने आप को इतना मत थकाओ कि अगले दिन आप उठ के फिर से परफॉर्मेंस नहीं दे पाओ. You need to be consistent. You need to be consistent instead of overdoing yourself, instead of being so harsh, being so rude to yourself. Do not do that. Be consistent in your efforts each and every day. All right? SSB is all about your consistency. Do not overdo yourself in order to achieve maximum results. Do not do that. एक दिन में आपको maximum results नहीं मिलेंगे. रोज करोगे किसी टास्क को, रोज करोगे, you will get results. You will get maximum results. Overdoing, अगर आप अपने आप को रोज overdo करते हैं,
you will decrease your efficiency. आप active नहीं रहेंगे. Your body will be really wretched. You will be, not in your complete senses. You will not feel good about yourself. So this thing doesn't work. So stop overdoing yourself and start being consistent with yourself. The next part is very, very important, that freshers versus repeaters recommendation rate. अक्सर कहा जाता है कि fresher has a higher capacity, higher capability of getting recommended. Yes, that is true, but it doesn't mean कि जो भी repeaters आए हैं वो एक mindset लेके आए कि yes, ये तो fresher है, ये हो जाएगा recommend या हो जाएगी recommend. I am a repeater, मेरे बहुत कम chances है recommend होने के. Do not feel that about yourself. I already told you that it is your quality, it is your personality that will recommend you, that will get you into the forces, not freshers or repeaters tag. सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हम सबको रेकमेंड करने के लिए बैठा है. दे वांट ऑल ऑफ अस टू गेट सिलेक्टेड इनटू इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी. डिपेंडिंग अपॉन आवर क्वालिटीज शो करोगे, रेकमेंड होगे. If not, you'll not be showing your qualities, then please do not expect recommendation from the SSB. Do not expect recommendation from the Service Selection Board. All right, repeater हो चलेगा, कोई बात नहीं. Prepare yourself more. Introspect करो अच्छी तरह से. मैंने कहाँ गलत किया? Where I was wrong in my previous attempt. Next attempt में उसको improve करो and get recommended. Instead of keeping a concept कि ये तो fresher है, मैं तो repeater हूँ, I cannot get recommended. This is a myth and this is something negative in our mind. All these myths are basically blockages to our mind. All these myths are basically blockages to our capabilities. Remove all these myths and perform your 100%. So I hope guys आपको सारे points बहुत ही अच्छी तरह से समझ आए होंगे. As well as don't confuse yourself. In fact, uplift yourself from all these myths. Work really hard towards your goals. Introspect yourself. And yes, do not get bogged down by your previous attempts. All these myths are basically blockage in your minds. So remember that you need to erupt, you need to diminish all these blockages in your mind, and you need to achieve your goal. That is how we will be able to get into the academy as soon as possible. And also guys, Defense Mania is coming up with master interview course, in which I will be personally guiding you about your SSB interview, what to do, what not to do, what body language to carry, and other specific details will be covered and analyzed with me personally, as well as I will be taking your 2 mock interviews. For more information guys, you need to fill up the Google form that is linked in the description box below. So kindly go through it and fill up the form. Thank you so much guys.